Am I audible? Yes, sir. So let us wait for 2 minutes so that the rest of the student could join, and then we will start the class. Okay. Yes, sir. Okay, so let us start the class because it is already 2 minutes past, and some students have joined, but the rest of the students will join afterwards. I don't know why they are so late. So let us start our class today. So last day we have talked about the logic gates yesterday, and we have talked about the and or gates, and they are the basic gates. What do we classify the gates? In the first chapter, when we started the logic gates, that time we started to classify the gates. And we classify the gates into three categories. Everybody remembered? Yes, sir. Yes. One is called the basic gates, next is called universal gates, and the last one is called arithmetic or numerical gates. So today we will start our next phase, that is the universal gates. And we know the universal gates. What are the universal gates? Everybody know? Can you tell me the universal gates? NAND and NOR. Yes. Gate and NOR So, gate. so today we will discuss about the universal gates. That is NAND gate and NOR gate. So today we will discuss about NAND gate and NOR gate. So NAND and NOR gate today we will discuss on.
So for the case of NAND and NOR gate, we already discussed that basic gates are those gates which are used to to represent any type of digital logics or digital logics circuit. We use basic gates. Like what are the basic gates we have? We have AND, OR, and NOT. So basic gates are what I am writing, just a minute. So basic gates, NAND, sorry, AND, OR, and NOT. These are the basic gates. And what are the universal gates? That is NAND or NOT. So what is the difference between basic gates and universal gates? Basic gates are those gates by which we can construct or we can express any type of digital logic. Any type of digital logic can be expressed by basic gates. That means NAND and NOR, these two gates can be also expressed by using the basic logic gates. And universal gate, NAND or NOR gate, what is the universal gate? So NAND and NOR gate are those types of gates by which we can express any type of gates, logic gates. That means, mind it, the difference in expression is different. So mind it, it is very interesting. Any type of digital logic system or any type of digital logic can be expressed or can be constructed with the basic logic gates. But any type of digital logic gates or digital logic circuit can be expressed by or can be constructed by universal gates. Understand the difference? Yes, sir. Okay. So let us start with the NAND gate. So what I told that NAND gate can be constructed with the basic gates. So we will take some basic gates and we will start to construct NAND gate. What is the NAND gate logic? So if I draw one gate, let us take AND gate, our basic gates. This is our AND gate. So if I construct it, give the two input A and B, and if I connect it with an inverter, this gives us logic y equals to A dot B whole bar. So this is nothing but the concept of NAND gate. So the concept of NAND gate can be written like this. That this is the concept, this total is the concept of NAND gate. So this total circuit operation is been considered as the NAND gate. Means AND gate, and then the output of the AND gate is inserted into a NOT gate, and that is our total circuit of a NOT gate. So if I use the De Morgan's rule, how can we express? We can express it by A bar plus B bar. If I want to simplify it using De Morgan's rule, we will use this thing. So this is our NAND operation or NAND gate. Simply for the NOR gate, how can I draw the NOR gate? We are using logic gates, basic logic gates.
I will take two inputs. Okay, I will use a OR gate here, simple OR gate, and then I connected the output of the OR gate to an inverter or NOT gate. So this total thing or total setup is considered as the NOR gate. So this is A, this is B, and this is Y for us. And Y is equal to A plus B whole bar, that is equals to A bar dot B bar. So this is our NOR gate. So by these two basic logic gates, we can derive the two new gates that is told to us, that is AND gate and NAND gate and NOR gate. Is it clear to you? Yes, sir. Okay. So it is very much easy. You know it previously. So by this logic, what I can write also, by this logic, what I can do also, I can construct the NAND gate using OR gate also. How? By the logic. I will take two inputs. I will add inverter on this. I will use a NOT gate in that inputs. So two NOT gates are added. Next, I add a OR gate, and that's I get the output. So what happens? These are the inputs A and B. If I connect it with the NOT gate, so that will be inverted, and I will get A bar and B bar before entering the OR gate, and then we will get the output. What output we will get? Y is equal to A bar plus B bar. Got it? Yes, sir. So what will be here? Can I use the AND gate here? Yes, sir. So I can use the AND gate. Same circuit will be. A NOT gate will be connected before the input entering the AND gate. So these are the NOT gate that is connected before entering the AND gate. So these are A and B, and this is A bar, and this is B bar, and the output that will come, that is Y, that is equals to A bar dot. So clear, everybody? Everybody cleared? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I can represent the NAND gate using the AND gate and NOT gate. I can represent the NAND gate using NOT gate and OR gate. Same as I can represent NOR gate using OR gate and NOT gate, and I can also represent the NOR gate using AND gate and NOT gate. So this is why our what our AND gate, OR gate, and NOR gate are called the universal gates. Understand why they are called? Sorry, they are called the basic gates. Understand why they are called basic gates? Yes, sir. जैसे कि बेसिक से आप लोग कुछ भी आप लोग डिराइव कर सकते हो. अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो आपका कुछ भी डिराइव करने में आसान हो जाता है. ऐसे ही ये तीनों गेट अगर आपके पास नॉलेज हो तो इससे किसी भी गेट हम लोग किसी भी डिजिटल लॉजिक को हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं. दैट इज द मेन थिंग. सो व्हाट इज द सिंबल?
This is the logic. What is the symbol? The symbol is that we generally use for NAND gate is an AND gate which is connected, output is coming as a bubble. So this is A, B, and this is Y. So this is a symbol. There is another symbol satisfying these conditions. You can use this symbol also. And that symbol is bubble, and there is a OR gate. So this is A and B, and this is Y. So this is also symbol. So that's why for this condition, NAND gate is also called as what? Bubbled OR gate. So the name of the NAND gate is bubbled OR gate because there is a bubble before the OR gate when it is constructed for these conditions. Same as for the this gate, that is the NOR gate. Actually, we generally used the symbol an OR gate. In front of it is a bubble. So this is our NOR gate, A and B, and this is Y. But if you satisfy this logic, then you can draw it like this. And there is the AND gate, and this is the Y. So this is A and B. So that's why the NOR gate is also called as, can anybody will tell me? Bubbled AND gate. Yes, it is also called bubbled AND. Clear everybody? ठीक है? Yes, sir. So that is the uh, means what I tell. That is our symbol and general trivia on AND gate. Now let us go down a little bit. Okay, so symbol is completed. Now let us go to the important part. That is truth table. Now we are going to the important part, that is truth table. So what will be the truth table? We are considering three input. So sorry, two input. So our inputs are A and B, and the output is 1. So what are the conditions? You know, 0, 0,
0 1 1 0 1 1. So these are the conditions. Nobody no ambiguity occurred. So what happens to the truth table if I consider this logic? If I consider this logic, if I put this logic here, so you can see 0 0. That means 1 plus 1. That is equals to how much? If I do the calculations, many calculations you can take from here. So 0 is inverted into 1 plus 1. That is equals to how much? 1. It is not adding, it is operating. So 0 0 I will get 1. 0 1 1. 1 plus 0, that is also 1. Next is 1 0, that is 0 plus 1 equals to 1. And the last is 0 plus 0, that is equals to 0. So by this we can get the truth table 1 1 1 and 0. Clear everybody? Yes, sir. और एक चीज है, अगर तुम इधर से ट्रूथ टेबल नहीं करना चाहते हो तो एक आसान तरीका है, अगर अपना एंड का जो ट्रूथ टेबल है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो तो हमारा ट्रूथ टेबल निकल जाएगा. एंड का क्या था? दोनों हाई होने से आपको 1 मिलता, याद है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर दोनों हाई होने से नहीं होगा, बाद बाकी जगह में आपका कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा, तो मतलब हर जगह पे 1 होगा, सिर्फ उसमें 1 नहीं होगा. ठीक है? सेम हियर ट्रूथ टेबल. तो और का ट्रूथ टेबल क्या है बताओ? और का ट्रूथ टेबल बताओ कोई मुझे. 0 1 1 1. 0 1 1 1. तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा बताओ? 1 0 0 0. 1 0 0 होगा सर. तो यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0. ओके, बिकॉज और गेट का ट्रूथ टेबल क्या है? 0 1 1 1, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. ठीक है? हाँ Yes, या ना sir. बताओ. Yes, sir. ओके. अच्छा, लास्ट डे में मेरा और गेट कंप्लीट हो गया था. No, sir. And हुआ था. तो मुझे बताओ, मैं वही सोच रहा था कि और गेट कंप्लीट हुआ कि नहीं. सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ. अगर हम लोग इसके लिए बोले, so NAND gate does not holds the associative law. NOR gate also does not holds the associative law. So two gates that does not holds the associative law are NOR and NAND. Associative law जो है वो होल्ड नहीं होता. और जो कम्यूटेटिव लॉ है, आप लोग जानते हैं कौन सा कम्यूटेटिव लॉ है? तो कम्यूटेटिव लॉ इज होल्डिंग, मीन्स NAND और NOR कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं.
So commutative law, it follows. So right, and commutative law, it follows. तो इसका डिसेबल एनेबल थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम और पे चले जाएंगे क्योंकि और बाकी है। तो इसका पहले डिसेबल एनेबल देख लेते हैं थोड़ा। तो आप देख सकते हैं इस इनमें से अगर मैं दोनों को ग्रुपिंग करूं, जब a 0 0 रहता है तो आप देखिए इसमें हम लोग क्या मिलेगा आपका, b का जो वैल्यू है, मतलब और एक इनपुट का जो वैल्यू है 0, वो इन्वर्टेड हो रहा है, और जो दूसरा वैल्यू है वो इन्वर्टेड नहीं हो रहा। मतलब आपका 0 0 में आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट जो है वो क्या होता है, फिक्स्ड हो जाता है, होता है नहीं? इज देयर एनी चेंज इन द आउटपुट? No, sir. So I write here for disable enable, it is disable when any input is 0 and the output is always focusing 1. Okay. Now दूसरा जो केस है, मतलब 1 1 केस में आप देख सकते हैं 1 1 केस में ये इनपुट का हरकत हो रहा है, मतलब आउटपुट पे चेंज हो रहा है। आउटपुट में कैसे चेंज हो रहा है, देखिए 0 जब हो रहा है तब यहाँ पर 1 हो रहा है, और 1 जब हो रहा है तब ये 0 हो रहा है। मतलब ये कैसा काम कर रहा है, इन्वर्टर की जैसे काम कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 1 1 में नैंड गेट इनेबल होता है पर आउटपुट इन्वर्टर की जैसे काम करता है, आउटपुट इन्वर्टर हो जाता है। ओके, अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब इसमें देखिए डिसेबल इनेबल के लिए, देखिए यहाँ पर, सो डिसेबल इनेबल के लिए यहाँ पर देखिए 0 0 जब होता है, इज देयर एनी चेंज? यस, you can see there is the input output change, you can see the output is changing. हेलो हेलो, Sir. हाँ पावर कट हो गया था, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, फिर से कनेक्ट हो गया। सुनाई दे रहा है अब? Yes, sir. Yes, There sir. है. अच्छा अच्छा, एक मिनट।
Just a minute. So can you see the board? Yes, sir. Okay. So what I'm telling is that the NAND and NOR gate follows the associative law, but it does not follows the associative law, but it follows the what commutative law. Okay. And now we are talking about the enable. So for this, you can see, for this for this first case 0 0, you can see the output has been changing, and output is changing from if I take the B, another input. So at that point B equals to 0, the output is 1, and when B equals to 1, the output is 0. So that means it is not depending on B, but it is inverting the value of B. So that's why we can write here enable but inverter, means it acts as an inverter when it is enabled. And for the 1 1 case, you can see here the output is fixed, it is 0 0. So I can write here disable and output equals to 0. So everybody clear up to this? Yes, Cleared? sir. Okay. Now we will talk with for the unused input. So before going to the OR gate, we must finish this thing. So we will talk about the unused input. How to use the unused input here. So let us take the heading unused input. So for the unused input, it is same as AND gate. So what we do in the AND gate, we will also do it here. Same here for unused input. It is same as OR gate. Okay. Clear, everybody? Yes, sir. So that is NAND and NOR gate. That is a short overview over NAND and NOR gate.
We will discuss NAND and NOR gate and other things more when we'll continue. Okay, so now let us go to the OR gate portion because OR gate has not been finished. I forgot that OR gate has been finished and I started from here. So we will start with the OR gate. So did I start the OR gate? हमने शुरू किया था OR gate? No, sir. So today we will discuss now OR operator. For the OR operator, the logic is output is high value, output is high value when anyone or all the inputs are high. So this is the what important thing that we know about OR operator. Anyone or all the inputs are high. This is very important. एक भी या एक से ज्यादा इनपुट अगर हाई होता है तो उसका आउटपुट 1 आएगा. तो पहले एक नंबर पे हम लोग इसका अगर सिंबल देखते हैं तो जो डिजिटल लॉजिक इस और ऑपरेटर को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग नाम देते हैं OR गेट. और वो देखने में कैसा है? This is what OR. This is A, this is B, and this is Y equals to A plus. So this is the OR operator. This is not mathematical, this is OR operator. Mathematical addition, but it is operator OR. There can be 3 input OR gate also. So 1, 2, 3 inputs are there. So A, B, C, and the output will be Y equals to A plus B plus C. Okay. So let us go to the next part, that is the truth table. So put truth table, I take A and B are the 2 inputs and Y is the output and the logic is A plus B. The logic is A plus B. So if I put 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. These are the input combinations. So what will get in the output? Any one is high, then I will get the output high. So here no one is high, so I will write 0. Here 1 is high, so I will write 1. Here 1 is high, so 1, and this is also 1.
So this is the truth table of an OR gate. So we will use this implementation different times. So this is very much important. You can tell this is very much important on gate. Now, what comes? Associative law. I told only two gates are there in digital circuits that does not follow the associative law, and they are NAND and NOR. So obviously, OR gate follows the associative law. So what is the associative law for OR gate? It will be A plus B plus C equals to A plus B plus C. So this is the associative. It follows it. You have to prove it. So I am not doing the proof because last day we have shown how to prove it. So I am not doing just that much thing for you. You must prove it. I will give it in the home tax. Next 4 is our commutative law. It also follows the commutative law. And what is the commutative law for OR gate? Anybody? Any idea? So A plus B equal to B plus A. Yes. It will be A plus B equals to B plus A. So this is the commutative law or OR gate. Okay. So I'm not proving it. I'll give it in the home tax. You must prove it by the logic that we proved in the last section and gate. Now is our enable and disable. Enable and disable. So for enable and disable, let's see the output again or truth table. A and B and Y is equal to A plus B. So 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. So answer is 0, 1, 1, 1. Now let us group the first two. If I take the first two grouping, I see there is a change in the output, and the output is nothing but what is in the next input, that is reflected. So this is enable, and it is acting as a buffer. You can see this is what, this is here, this is also what, this is here. Now next to grouping, what happens? Is there any change in the output? No, sir. No. So it is disable. Output equals to 1. So we can write 0 is enable or buffer. So if I draw it, how can we represent it? It is our OR gate.
So this is our two inputs and this is the output y. So if one input is 0 and this is b, so from the output if we see, if v is 0, the output will be 0. And if b equals to 1, the output equals to 1. So it is buffer. So I can represent this circuit like this. B y equals to b. No problem. Next, what I write? 1. It is divisible with output 1. Output 1. So that means if I give 1 and b here, then what will happen in the output? Anybody? What will happen in the output? कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? Yes, sir. Hello. So what will Yes, be sir. in the what will be in the output? There will be no change. If I give 0, it will be 1. If I give 1, it will be 1. That means there is no change. So output will be always 1. Clear? Yes, sir. Just a minute. Now, if I take about these unused inputs, if I look about these unused inputs, this is number 6. So what happened? For TTL logic, same as the AND gate. For TTL logic, it is 1. Unused input is 1. Always in the TTL logic, you will take unused input as 1. And in ECL logic, the unused input is 0. So learn by heart this thing. This is very much important. Now, how can we do it? What is the disable and what is the enable for this OR gate? 0 is the enable and 1 is the disable. So on considering that thing, what we can do? First procedure, number 1, small one, connect to 0 because 0 is our enable. That means if I draw the circuit, this unused input will be connected to 0. This is A.
This is y. So y equals to a plus 0. That is nothing but equals to a. So that means what we have to do, we have to connect it to the ground. Actually, it is happening what? We are connected it to ground. And this is the input a. So y equals to a plus 0. It is equals to a. Okay. Next. I will connect it to another input. So this is A, this is B. Now I'll connect it, the unused input, to B. So that gives you the logic what? That gives you the logic y equals to A plus B plus B. So applying De Morgan's rule, you can write A plus B. So that is our concept, no change. Clear? क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. और नंबर 3 हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर? टीटीएल लॉजिक यूज नहीं कर सकते क्योंकि टीटीएल लॉजिक में वन आ जाएगा। तो टीटीएल लॉजिक अगर यूज करेंगे तो मेरा डिसेबल हो जाएगा। तो हम लोग इससे लॉजिक यूज कर सकते हैं। हम लोग कौन सा लॉजिक यूज कर सकते हैं? ECL। तो ECL लॉजिक के हिसाब से अगर हम फ्लोटिंग रखते हैं तो मतलब मेरा क्या होगा? बोलिए, आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? ECL लॉजिक में अगर ये फ्लोटिंग रहेगा तो मतलब क्या होगा? 0. Yes, that means y equals to a plus 0. It is equals to a. और TTL में क्या होगा? TTL में अगर करेंगे तो क्या होगा? TTL में हर बार आ जाएगा y equals to a plus 1. So that is equals to y equals to. Clear? Yes, हाँ? Yes, sir. सब क्लियर हो गए? Everybody Yes, has sir. Yes, understand? sir. Yes, sir. Yes, sir. 20 people, 28 people are here, so everybody has understand. Everybody is watching the screen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको ये लॉजिक याद आ गया ठीक से? Everybody has understand the logic? Yes, sir. अच्छा, तो एक प्रॉब्लम करते हैं। अगर कितना अंडरस्टैंड आप लोग किए हैं इसका थोड़ा देख लेते हैं। ये जो मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मुझे गेट एग्जामिनेशन में मिला है। प्रॉब्लम
ये आया था गेट 2004 पे। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार आता है। गेट का ही क्वेश्चंस लोग लेकर यूनिवर्सिटी एग्जाम में दे देते हैं। तो मेरे पास 3 गेट्स है। पहला गेट एक एंड गेट, ये मेरा एंड गेट है, ये मेरा दूसरा एंड गेट है। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, और ये मेरा एक और गेट है। और इसके साथ और एक नॉट गेट कनेक्टेड हुआ है। तो इतना सब गेट है। अब मैं पहले जो गेट है, ये मेरा 1 नंबर गेट, ये मेरा दूसरा गेट एंड गेट। तो पहला जो इनपुट है वो है ए, दूसरा जो इनपुट है वो है बी। तो ये पहला इनपुट और दूसरा इनपुट 1 नंबर गेट के लिए है। अब दूसरा जो गेट है उनमें 2 इनपुट है और दोनों इनपुट ओपन है, मतलब फ्लोटिंग। अब ये आउटपुट जाकर कनेक्ट होता है इस इनपुट में और ये आउटपुट जाकर कनेक्ट होता है यहाँ पर, और इसका आउटपुट जाकर कनेक्टेड होता है इस नॉट गेट से, और इसका आउटपुट आता है जिसका नाम हम लोग देते हैं y। अब क्वेश्चन है व्हाट इज y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। और यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख दिया है, मतलब एग्जाम में लिख दिया है क्वेश्चन के साथ कि consider TTL लॉजिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डिपेंड कर कर हमारा आउटपुट निकलेगा। तो आप बताइए इसका आउटपुट क्या है। एक एक को पूछेंगे, ठीक है? आप लोग समझ गए? ओ, समझ जाने से आप लोग घट गए, 21 पीपल हो गया। क्या मुसीबत है आप लोग, बहुत ही बढ़िया है आप लोग। ठीक है, तो पहला चीज हम लोग शुरू करते हैं। सुमन सिंह से। सुमन सिंह, मेरा बात सुनाई दे रहा है? सुमन सिंह, everybody can hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Suman Singh, are you there? Suman Singh, Suman Singh, can you hear me? Okay, so please
Who is there? मुस्कान तो नहीं है. और भी कम होगी. अच्छा. श्वेता प्रकाश, कैन यू हियर मी? Yes, sir. अच्छा. श्वेता, आप बताइए, ये जो आप बोर्ड देख सकते हैं? Yes, sir. Okay. Can you tell me what is the output that will come here? सर एक क्वेश्चन था, जो ओपन जो है उसको हम मतलब टीटीएल के अकॉर्डिंग तो वो 1 होगा, लेकिन ओपन है तो हम उसको 0 ले कि 1 ले, इसमें कंफ्यूज है थोड़ा. इतना देर तक आप लोग क्वेश्चन ही ठीक कर रहे थे. मैं जब आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग समझ गए, आप लोग समझ गए, आप लोग समझ गए, तो आप लोग चुप रहते हैं. फिर जब मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोग समझ गए, तो आप लोग क्वेश्चन करते हैं. ये क्या क्या कौन सा मतलब, ये कौन सा तरीका है? डाउट है तो डाउट होना चाहिए. मैं तो अच्छा तरीके से डाउट को हैंडल करता हूँ, पर आप लोग बोलते क्यों नहीं? आज अगर ये प्रॉब्लम मैं क्लास में नहीं कराता है तो आप लोग चुपचाप बैठे रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज गुड. टीटीएल लॉजिक कंसीडर करने से हम जितना भी ओपन सर्किट रहेगा या ओपन इनपुट रहेगा, वो सबको 1 कंसीडर करेंगे, 0 नहीं कंसीडर करेंगे. अगर टीटीएल लॉजिक नहीं रहेगा, तब ईसीएल लॉजिक या कुछ नहीं बोलेगा, तो मेरा जो गेट है उसका डिसेबल और इनेबल की फैसिलिटीज के ऊपर हम कंसीडर करेंगे. अगर देखेंगे उसका इनेबल 1 से है तो 1 कंसीडर करेंगे, अगर उसका इनेबल 0 से है तो 0 कंसीडर करेंगे. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेड? Yes, sir. सर तब तो इसका आंसर 0 आना चाहिए. y का वैल्यू 0 आना चाहिए. यस सर. अच्छा. और कोई है जो बोलना चाहता है अलग? Sir, A dot B plus 1 का होल बार. a डॉट b प्लस 1 का और y. अच्छा. रितिका कुमारी, Yes, sir. कैन यू हियर मी? Yes, sir. Okay, can you tell me what will be the answer? Why? Okay, Shreya, can you tell me? Are you there, Shreya? Shreya? कोई नहीं बात कर रहे. शुभम सिंह, श्रेया, दिव्या प्रभा, आर यू देयर? Cannot hear. Okay. Alok Das, are you there? Piyush Kumar, are you there? Piyush Kumar. Piyush Kumar, can you hear me? Yes, sir. Can you tell me the answer? Yes, 0. Rahul Sharma, are you there? Rahul Sharma. Aman Kumar Singh.
What will be the answer? Aman Kumar Singh. What will be the answer, Aman Kumar Singh? Aman Kumar Singh, what will the answer? Sir, सुनाई दे आंसर क्या होगा बताइए आपका आज सुनाई दे रहा है पर कोई आंसर नहीं आ रहा है सर नहीं पता सर। ठीक है आप म्यूट कर दीजिए तो ये है आप लोगों का क्लास का हालत सो डोंट थिंक एनीथिंग फ्रॉम मी आई विल नॉट हेल्प एनीथिंग मुझे बहुत ही खराब लग रहा है आप लोगों का क्लास में हम 200% दे रहे हैं और आप लोग क्या है कि कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे so it is very miserable conditions so now I will don't ask anything in your class I will do what other teachers do I will just tell the class I will not ask any interaction also what will be happening you know एग्जाम में क्या करोगे आप लोग जानते हो एंड डोंट होप एनी टाइप ऑफ कंसिडरेशन फॉर एनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आज से कोई कंसिडरेशन बंद हो गया आप लोगों का रिक्वेस्ट भी बंद हो गया आप लोग रिक्वेस्ट करके देखो मेरे साथ अगले दिन से देखो कोई रिक्वेस्ट नहीं होता आप लोगों का सो दिस इज it is coming a dot b this is coming 1 into 1 then the output is coming here the output will come what will the output it will become a dot b from this and then this is OR gate so it will be plus 1 because 1.1 equals to if I apply Morgan's rule it will be 1 so a plus b into 1 so what is this a dot b equals plus 1 answer will be what the answer will be always 1 you know that because it is the OR gate so the answer will be always 1 so inverter is used here so what will be the output y equals to 0 because if 1 will go here the output will come here so y is equal to 0 is the answer okay so like this you have to solve the answers y equals to 0 is the answer so like this you have to solve all the answers for different type of circuits so let me give you a homework those who are not getting me I don't see here the CR also CR Rahul is there कोई भी CR है सर नहीं है कोई भी शेयर Abhigyan Aditya, are you from regular? Yes, sir. Abhigyan, please tell Rahul to contact me.
Okay, sir. After this class, after 11:10, it is must for him to contact me today. Okay, sir. And Ritika, Yes, sir. you are from lateral. Yes, sir. Okay, tell Muskat to contact me after this 11:10. Please contact me. Okay, and it's must Okay, for sir. her also to contact me. Okay, sir. So I am sharing you the homework problem. Just a minute. First two homework, let me write down, and then today's homework are there. So first homework will be first one, to prove that NAND and NOT doesn't follow associative logic. Next, to prove that OR gate follows associative and commutative logic. And last but not the least, these two diagrams. This is number 3. Okay, so please note it down. You can also get this from Teach Me platform. I will upload this.
So these are the homeworks of today. So again I am seeing the homeworks. कोई कुछ बोलना चाहता है? No, sir. Just a minute, let me load the whiteboard. So let us start the next logic. आप लोगों को सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So next is our exclusive OR.
exclusive OR gate. This is also called XOR for exclusive OR, exclusives X and OR gates OR, or it is also called XOR. So two name is probable. So what is the traditional symbol of XOR? The traditional symbol of XOR is a OR gate, but another thing is here. This is the exclusive. That's why it is called exclusive OR. So this is A and B, and the output is A XOR B or XOR B. So Y equals to A XOR B. So this is the traditional symbol I told you. Traditional symbol. And there is IEEE symbol also. You know what is IEEE? Anybody knows IEEE? No, sir. What No, is sir. IEEE is a institution or it is a, like we told about हम लोग अगर वेट मापने जाते हैं तो क्या बोलते हैं आप लोग? केजी में दो, ग्राम, किलोग्राम ऐसा दो देते हो आप लोग? या अगर आप लिक्विड किसी चीज को मापने जाते हो, जैसे कि पेट्रोल खरीदते हो तो क्या करते हो? मिलीलीटर, लीटर ऐसे ही खरीदते हो, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो ये जो लीटर, मिलीलीटर जो भी है या केजी, ग्राम जो भी है, उसका तो एक स्टैंडर्ड मास है. मतलब इतना मास को हम लोग 1 किलो बोलेंगे. ये तो सब जगह सेम है. मतलब आपके घर में सामने वाले जो आलू वाला 1 किलो बोलता है, मेरा घर के सामने जो आलू वाला वो भी 1 किलो से बोलता है. क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया कि इतना आलू को हम लोग 1 किलो बोलेंगे. तो हम लोग क्या किया, इसको स्टैंडर्डाइजेशन किया. और इसको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए कौन आता है? ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, या SI, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. तो वैसे ही हम लोग इंजीनियर्स के लिए, खासकर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसको कहते हैं हम इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल. ये एक सोसाइटी है जहां पर हमने देखा है बहुत सारे चीज हम लोगों को एक फिक्स करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा. जैसे कि हम लोग लेआउट डिजाइन करने के लिए जो रूल्स करते हैं उसका अपना स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, या कुछ कुछ वैल्यूज हम लोगों का स्टैंडर्डाइज रहना चाहिए, जहाँ पर हम लोग का मतलब डिफरेंट जगह पर डिफरेंट ओपिनियन है. तो वो स्टैंडर्डाइज संस्था का नाम है IEEE. तो वो जो स्टैंडर्डाइज कर देते हैं हम लोग वही मानते हैं, क्योंकि वो एक नियामक संस्था है और वहाँ पर वो लोग बैठ के 5, 6, 7 जो आप रिनाउंड साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, वो लोग बैठकर वो स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं. उसका मान वो जो निकलते हैं उसको ही हम लोग फॉलो करते हैं. So that is IEEE. Understand? Yes, sir. So IEEE ने सिंबल बनाया है XOR के लिए ऐसा. ये है A, ये है B, ये है 1, ये आउटपुट Y. So this is IEEE symbol. Okay. Yes, sir. अब ये जो इक्वेशन है A XOR B, सॉरी ये B होगा,
इसका इंटरनल सर्किट क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरनल सर्किट, तो y इक्वल्स टू ए और b, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, a डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और लिख सकते हैं अगर और गेट की हिसाब से लिखे तो a प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार, दोनों ही सही है। तो अगर ये लॉजिक को, अगर हम ये लॉजिक को इंप्लीमेंट करना चाहे, if I want to implement this logic, how will you construct the circuit or XOR gate? I told XOR gate can be constructed by any type of basic gates. So I will construct the gates. I will take a AND gate here. यहाँ पर दो AND गेट है, एक और दो, इसीलिए दो AND गेट लेंगे हम। ये एक AND गेट है एक लॉजिक के लिए, ये मेरा दूसरा AND गेट है दूसरा लॉजिक के लिए। अब पहले में हम लोग एक इनपुट देंगे, इसका नाम देंगे A, और यहाँ पर एक इनपुट देंगे जिसका नाम है B, क्योंकि ये डायरेक्ट इनपुट है। अब यहाँ पर एक नॉट गेट कनेक्शन कीजिए, करेंगे B के लिए एक नॉट गेट कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर एक नॉट गेट का कनेक्शन होगा, जो ये दूसरा गेट होगा, दूसरा इनपुट होगा सॉरी, और वो जाएगा B से। सो B से और एक वैल्यू जाएगा यहाँ पर नॉट गेट कनेक्शन होगा। वैसे ही A से और एक कनेक्शन आएगा, यहाँ पर जाएगा पर नॉट गेट लगा के, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, अगर दोनों को हम लोग लिखते हैं तो यहाँ से हमारा आउटपुट आता है ए डॉट बी बार, और यहाँ से हमारा आउटपुट आता है, बताओ, ए बार डॉट बी। यस ए बार डॉट बी। अब दोनों को हम क्या करेंगे, लॉजिक क्या है, प्लस है, मतलब दोनों को हम एक और गेट में चैनल करेंगे इन दोनों को। तो एक और गेट लगाते हैं, तो उसका आउटपुट आ जाता है, तो उसका आउटपुट आता है क्या हमारा, y इक्वल्स टू ए प्लस बी बार, सॉरी ए डॉट बी बार ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। तो इसका अगर ट्रूथ टेबल हम लोग निकालते हैं, इसका हम लोग अगर ट्रूथ टेबल निकालते हैं तो क्या मिलेगा, तो हमारा इनपुट कितना है, दो, ए बी, आउटपुट कितना है, y। तो हम लोग दो इनपुट अगर करेंगे, दो वेरिएबल्स करेंगे, तो कॉम्बिनेशन कितना होगा, चार, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो आउटपुट कितना आएगा भाई, 0110. हमारा लॉजिक क्या है, ए डॉट बी बार
plus a bar dot b. So put the values, if I want to solve it, put the values. I am putting the values first 0 0. So when it is 0, so it is 0, okay. Then it is bar, so 1 plus, this is bar, so 1 dot 0. So that is equals to how much? 0 plus 0. So that is equals to 0. So first output is 0. Next, 0 and 1. So next is 0 and 1. So y equals to 0.0 and 1.1. So that is equals to 0 plus 1. So that is equals to 1. So next is 1. तो ऐसा ही आपको लास्ट दो में मिल जाएगा क्या? एक में मिलेगा 1 और एक में मिलेगा आपका क्या? 0. तो आप यहां से देख सकते हैं यहाँ पर क्या देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को जब क्लास कर रहे थे पहले, आप लोगों को बोलते थे कि एक्सओर को हम लोग बोलते हैं ऑड वन डिटेक्टर. क्या बोलते हैं? ऑड वन डिटेक्टर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी ऑड वन रहेगा सर्किट में या ट्रुथ टेबल में, आपको यहाँ पर आउटपुट में 1 मिलेगा. That's why it is called odd one detector. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है. और गेट का एक क्या बोल सकते हैं, और गेट का एक एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं आप, और गेट का एप्लीकेशन भी बोल सकते हो कि अगर आपको कभी भी ट्रुथ टेबल भूल गए हो 2 इनपुट का, तो आप इस फॉर्मूला से भी आप लोग ट्रुथ टेबल बना सकते हैं. पर जब 3 और 5 इनपुट्स होगा तो मैं बोलूँगा कि ये फॉर्मूला मत यूज कीजिए, क्योंकि तब कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है. अब वो जनरल जो आपका कॉन्सेप्ट है उससे ही करिए. फिर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जब आपका शॉर्ट क्वेश्चन या गेट लेवल क्वेश्चन आएगा जहाँ पर MCQ है, तब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आएगा. दिस इज ऑड वन डिटेक्टर. ठीक है? अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. आज मुझे लग रहा है कि आप लोगों का टाइम लगभग खत्म हो चुका है. 11:05 बज रहा है. इसके बाद आप लोगों का क्लास है. तो मैं ज़्यादा तो कंटिन्यू करना चाहता था पर आज नहीं करूँगा. और जैसे कि मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिकल का CR है रेगुलर, राहुल को मुझे कॉल करने के लिए बोलिएगा. और जो भी लैटरल स्टूडेंट हो, प्लीज इन्फॉर्म योर CR मुस्कान टू कॉल मी. ठीक है? Okay, sir. Understand? Okay, Yes, sir. sir. And again I am repeating, the lab session which is not been happened on Tuesday from 3 p.m. to 5 p.m. will be taken from Saturday 3 p.m. to 5 p.m. So the attendance is mandatory for all. Attendance is mandatory for all. Okay? Okay? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay, so thank you.
You can leave. Thank you. Have a good day. Okay, thank you.